statically determinate structures in which we use equilibrium equations. Okay, now मैंने पहले previously भी इस बात पर discuss हुई थी. Now if we have something which is statically indeterminate structures, or when we have indeterminate structures, so and they are experiencing some forces and stresses, how we can calculate the reaction forces or the displacement that we need to calculate. Okay, so today's learning outcomes will be actually okay. So today's learning outcomes will be we will use the deformation and develop the findings, and we will use the geometry of the structure or the body, and then we can find the reactions and determine, and combining it with the equilibrium equation, we will determine and solve the statically indeterminate structures. And then we will also see the thermal the effect of the thermal stresses on the members, and different engineering problem in which the stress induced due to the thermal changes in engineering materials, basically. So how they can cause the deformation, and how we should calculate the forces in the members. And further, we will design some structures. Okay, so this is our learning outcome of today. And then okay, so in this bar, I mean, because if we see this bar now, equilibrium equation EFY is equal to 0, this will give us two unknowns and one reaction. So this will be statically indeterminate in this manner. Okay, if this is not restrained on the other part, that it will be simply statically determinate. Okay, determinate and indeterminate basically means that if the equilibrium equations are not enough to calculate the reaction forces, then it will be indeterminate. If the reaction forces can be calculated, or the internal forces can be calculated using the equilibrium equation, EFX is equal to 0, EFY is equal to 0, or MX, MY is equal to 0, MZ is equal to 0, then we can calculate the forces, then it will be determinate. The simple formula to calculate whether the structure is determinate or indeterminate is R is equal to 3 into N, where N is the number of members which we have. Or when it is greater than, definitely जब हमारे पास number of unknown reactions are more than our equilibrium equation, then we cannot calculate the using only the equilibrium equation, we cannot calculate the reaction forces. Okay, so I mean, this is the previous part. So now, I mean, so how should we deal with this problem to calculate the unknown forces which are not which cannot be solved using just the equilibrium equation? We will use the compatibility equation. Okay, so in this what is also called the deformation equation, which looks at the geometry of the I mean, any body or structure जो भी member है, we will take its geometry, and we will see whether it is deforming or whether there is a kind of a deflection in that member, and then we will also develop the equations using this deformations. So this is called the compatibility equation or deformation equations. Because the it creates or enforce ये मतलब it makes the compatibility with the equilibrium equation and the deformation that the structure that it undergoes relating to the loads and the reactions with the slope and displacement. So इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we can calculate the जो डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट्स हैं उससे भी हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, एंड देन वी कैन सिंपली पुट बैक इनटू द इक्वेशंस एंड कैलकुलेट आवर रिएक्शन फोर्सेस. Okay, so this is now if we have this kind of indeterminate structure, and one equation will be from equilibrium equation. Second equation we can create by just even assuming, because there can be no displacement because it is fixed on the both positions. So delta AB will be equal to 0. So delta AB is equal to delta AC plus delta CB, जो भी इसमें deformation मतलब होगी, that will be equal to 0. So we have a kind of a equilibrium. We have a kind of a compatibility equation, and then as we know, delta is equal to force into length over AE, and we can kind of form another equation, and just by putting the values we can calculate forces, which is F. I mean, any forces which is in this case is FA and FB. When we will do the example, you will understand more. So okay,
I mean, this is now simple. Just try to remember the compatibility equation है, that deals with the displacement and then we can calculate the forces. और जो equilibrium equation थी उसमें हमारे पास जो we have to calculate the forces and then हम लोग उसे internal forces या displacements निकाल लेते थे, ठीक है? So and then in indeterminate structure we will use both the equilibrium equation and compatibility equations. So in equilibrium, I mean, for the equilibrium equation, we have forces, we can calculate the displacement. And similarly for compatibility equation, we have displacement and then we can calculate the forces. This is the formula that we have, and vice versa, we can calculate the indeterminate structures. Okay. So this is again similar, the displacement diagram. We should make for equilibrium body for what you can say equilibrium equations, we made the free body diagrams and then we can simply calculate the forces, and then for compatibility equation we can draw the displacement diagrams, and then it is I mean we can assume if there are some forces acting on the bar or any part of the structure. And for unknown displacement we can calculate the unknown reaction, and then for unknown reactions we can go for the displacements. So I mean we don't have the reaction forces at A and we don't have the reaction forces at B. So but we know okay there's some kind of a machine that is applying 20 kilonewton force in this direction on this what you can say जो ये थोड़ा सा extend हुआ हुआ है kind of a collar, तो उसके ऊपर 20 kilonewton force लगी. Now this is अगर यहाँ B नहीं होता then it will be a simply what you can say statically determinate structure. Okay, then we can calculate okay this is 20 kilonewton, the reaction will be simply AX which will be equal to 20 kilonewton, ठीक है? But now we know that there is a kind of a restraint. अगर इस पे extend होगा तो यहाँ से भी कोई external force act करेगी or it can I mean have an effect on this machine. Okay, so let me start. The steel rod shown in this figure has a diameter of 10 millimeter. It is attached to the fixed wall at A, and before it is loaded, there is a gap. There is a gap between the wall at delta at this B, and the rod of 0.2 millimeter. And sorry, and the gap of 0.2 millimeter should be. Determine the reaction at A and B if the rod is subjected to an axial force of 20 kilonewton as shown, and neglect the size of the collar C, and take the Young modulus or elastic modulus is equal to 200 gigapascal. So I mean and this so first of all we always have to make the free body diagram. This is 20 kilonewton. Now we are assuming that जब इस पे force apply हुई है तो जो deformation हुई है वो deformation I mean is fixed by the is fixed by this wall, which will definitely cause the counterwards reaction which is FB, and then there is a fixed reaction which is FA. Okay, अगर मेरे पास सिर्फ ये simple bar होती and there is applying the 20 kilonewton load, then it is simply statically determinate and it will extend to some part, and this will be the force AX is equal to 20 kilonewton, and then FB, this is FA, and FB will be equal to 0. Okay, because there is no restraint in this condition. But now we have the problem in which we have a restrained body. So for this we can calculate okay EFX is equal to 0 and minus FA minus FB plus 20 kilonewtons, or we can convert it into Newton simply, is equal to 0. This is our equation 1. Now using, I mean now we have it's statically indeterminate. We have one equation but we have two unknowns, so we will go for the compatibility equation. So this is equilibrium equation. Now we will go for compatibility equation. So delta
B dash A, we know that it's 0.2 millimeter. I mean, itna ye extend ho sakta hai. We know that. Okay, so delta AB plus delta BC, it should be equal to 0.2, because इससे ज़्यादा तो restrained है, because there is a kind of a wall, उससे आगे वो नहीं जा सकता. So 0.2 equal to delta AC. This is C. Okay, delta AC plus delta BC, and we know that we can use the formula for delta, which is FA into length over AE plus FB into length जो ये लेंथ है, ये this length is increasing, but due to this force it can cause the opposite reaction into into the bar, and it is somewhat resisting the elongation in this direction. So we can take this as minus. So in putting the values, just by putting the values, we can calculate that 400. Okay, this is this length divided by area, which is pi 5 pi r square. So this is one part, and then we can calculate the other one also. FB is equal to into length divided by its area. By rearranging the values, we can have the another equation, which is FA is equal to 400 FA into 400 minus FB into that will go there, and it will multiply with the 0.2. This comes out to be 314.6 into 10 raised to power 5 Newton meters. Newton dot millimeters. So this is our second equation, and by solving this equation with this equation, now we have two equations and two unknowns. Now we can simply put the values by calculating simultaneously, and then we can have the forces. So FA is equal to will come out to 15.95 kilonewton, and FB will be equal to 4.05 kilonewtons. So I mean, now by the answer of these equations, we know that the force at B is 4.5 kilonewton. So जो हम लोगों ने generally पहले assume किया था कि that it is getting contacted with that kind of a restraint, and it is causing some force. So that actually holds true. अगर ये wall ना होती, and if it's not having a stress due to this force FB, so FB हमारे पास 0 होती, because there is no force. So that is kind of one of the simple question for the compatibility equations. 3A36 steel bar shown in figure this way are pin connected to a rigid member. Okay, if the applied load on the member is 15 kilonewton, and there we have a 15 kilonewton load, determine the forces develop in each bar. The bars AB and EF each have a cross-sectional area of 25 millimeter square, and bar CD has a cross-sectional area of 15 millimeter square. These are the areas. So we have different areas in this condition, and the bar ACE is rigid body, rigid member. So that means there is no
it is due to this load there is no deformation in that bar, but it will be definitely deflected in some kind of condition. So now again, because this is statically indeterminate structure, okay, we will first of all we will make the free body diagram for this. F, A, C, and E. Okay. So this is our free body diagram for this structure with the load 15 kilonewton. So using the simply first of all equilibrium equation, EFI is equal to 0. So FA plus FC plus FE minus 15 equal to 0. This is plus FE. This is plus Fe minus 15 kilonewton equal to 0. This is our equation 1. So now we have 3 unknowns, so we need at least 3 equations to solve the problem. Second, we can just simply calculate the moment. G. सर आप काइंडली सर अगर उर्दू में समझा दे तो सर लड़के बोल रहे हैं. Okay, मैं उर्दू में भी समझा देता हूँ, but I mean this is and so you guys are not in school, it's university, so you should supposed to understand English. मैं कोशिश करता हूँ उसमें उर्दू में भी कंटिन्यू करूँ. तो मुझे तो मसला नहीं, लेकिन लड़कों को है सर थोड़ा. नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. ओके, हमारा दिस इज आई मीन ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हो गई, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के मुताबिक ई एफ आई इक्वल टू 0. सो एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ ई माइनस 15 किलो न्यूटन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. देन वी हैव टू फॉर्म द सेकंड इक्वेशन. हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द मोमेंट एट दिस पोजीशन एट पॉइंट सी. सो एफ ए मल्टीप्लाई करेंगे दिस जो डिस्टेंस है 0.2, ठीक है, और सॉरी 0.4, ये 0.4 होगा बिकॉज हम लोगों ने सी पे कैलकुलेट करना है. मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0. सो this will cause opposite, so this will be negative FA into 0.4 meters plus 15 kilonewtons multiply with 0.2, ठीक है. ये नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी FE multiply with 0.4, so this will be also equal to 0, ठीक है. Okay. So this is our equation 2. This is equation 1. This is equation 2. Now we have two equations and we need one more equation. So equilibrium equations, and there is no effects, so we cannot form the equation using in x direction, ठीक है. हमारे पास x direction में कोई force नहीं है, तो हम लोग compatibility equation से एक और equation बनाएंगे, and then हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस हैं वी कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है. अब इसके लिए दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ वी विल मेक अ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है. इसको भी थोड़ा और से देखिएगा. हमारे पास जो रिएक्शन मतलब इस पे बॉडी पर आ रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी,
more displacement will occur at this position because the most reaction will be covered by this FA. ठीक है, हमारे पास फोर्स पे FA पे ज़्यादा फोर्स reactive force होगी, and then at FE it will be less. In similar condition, the opposite direction में जो हमारे पास displacement होगी वो FA में most सबसे ज़्यादा होगी, and then FE में सबसे कम होगी. And as we know that FA and FE have a equal diameter, so we can add their displacement. So if this is a bar, so first of all this is delta E, ठीक है, जो E की वजह से हुआ है, and then this is delta A, and at similarly we have delta C, ठीक है. So using the similar triangles, this is 0.4 and this is 0.8. We can using the similar triangle we can form the equation, ठीक है. तो compatibility equation क्या हो जाएगी? Delta A minus delta E is equal to delta C minus delta E over 0.4 हो जाएगा, and for this whole part we can take 0.8 meters, meters. Okay, and now we can get this delta C out. Half delta A plus half delta E. This is our third equation. इसको हम लोग when we will put the values in force, then this will become FC over 15 millimeter square, ठीक है ना. इसका हमारे पास एरिया 50 millimeter square दिया हुआ है, और E will be same, ठीक है, and length is also same, which will be constant, and FA की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FA into L डिवाइडेड बाय 25 मिलीमीटर इसका दिया हुआ है एरिया, और E will be same. Similarly जो E है उसके लिए भी हमारे पास 25 मिलीमीटर एरिया है और E सेम है. All the constant will ये simply cut out हो जाएंगे. So FC is equal to 0.3 FA plus 0.3 FE. So this is our थर्ड इक्वेशन. ये हमारी तीसरी इक्वेशन है. हमारे पास 3 अननोन्स थे और 3 इक्वेशंस आ गई हैं. तो इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. देन वी कैन कैलकुलेट द आंसर्स, एंड द आंसर्स जो आंसर्स हैं, FA इज इक्वल टू 9.52 किलो न्यूटन्स, and FB equal to 3.46 kilonewtons, and FC is equal to, or FE equal to 2.02 kilonewtons. Okay, so these are the forces that is acting on this bar, ठीक है. So another it was a kind of a question for with the compatibility equation, using the compatibility equation and equilibrium equation for statically indeterminate structures, ठीक है. सर यहाँ पे हमने C वाले पे डिफॉर्मेशन नेगेटिव लिया ना. डिफॉर्मेशन क्या किया है? C वाले बार पे हमने डिफॉर्मेशन नेगेटिव कंसीडर की थी ना. नहीं, इसमें हम लोगों ने C को वी जस्ट टुक आउट द C आउट. जो आप बात कर रहे थे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ नेगेटिव लिया था, जब दिस इज, मैं बताता हूँ.
दिस वाज डेल्टा ए, और जो हमारे पास दूसरा डेल्टा आ रहा था, दिस इज डेल्टा बी। ओके, इसमें नेगेटिव नहीं लिया, इसमें हम लोगों ने इक्वेशन डेवलप किए। तो ये डेल्टा बी वाज ड्यू टू द फोर्स एफ बी, सही है। सो दैट्स व्हाई वी टुक इट नेगेटिव। बट इन दिस कंडीशन हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स से एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट्स थी, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हम लोग को ई में हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंड देन सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, एंड यूजिंग दैट इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन यूजिंग 1 2 इक्वेशन, सिमिलर जो इक्वेशंस है हमारे पास, साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करके हम लोग के पास ये फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अबाउट द थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। सो okay, thermal effect, I mean definitely can cause in जो मटेरियल हमारे मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स पे डिफरेंट थर्मल इफेक्ट होता है, ठीक है। किसी में ज़्यादा थर्मल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे आई मीन दीज आर स्टील रेल्स, और ड्यू टू द समटाइम्स in summer they can just deform just because of the stresses that is developed because of the thermal strain. थर्मल स्ट्रेन का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर चेंज की वजह से उसको उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, एंड इफ देयर आर नो एनफ स्पेसेस प्रोवाइडेड बिटवीन द रेल्स इट कैन डिफॉर्म द स्टील रेल्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, और इवन इन मशीन्स जब कोई मशीन गर्म हो जाती है इट कैन गेट डिफॉर्म्ड एंड इट कैन कॉज द आई मीन फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड वन ऑफ द फेलियर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कोलिजन के में हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि द स्टील बिकॉज ऑफ द थर्मल चेंज, बिकॉज जो आग लगी थी उसकी वजह से जो स्टील उसके मेंबर्स थे विच वर होल्डिंग द बीम्स एंड एवरीथिंग, वहाँ कुछ डैम्पर्स भी थे, उनमें टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, एंड इट कॉज द फेलियर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। एनीवे, so thermal stresses, I mean the effect of the thermal can cause damages to material or structures, and we have to consider the stresses that is induced into the structure because of the thermal change. जो मोस्ट हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, स्टील हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दे एक्सपैंड ड्यू टू द हीट, ठीक है, और एंड दे कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं, तो एक्सपैंड करने से वो एलोंगेट हो जाएंगे, और कूल करने से वो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस अल्फा is basically called the thermal expansion coefficient, ठीक है। This is material dependent property, and for our material we take it we assume that they are homogeneous and isotropic materials, so it's I mean this is same in all directions, xyz direction of the material, ठीक है। So this is called the thermal expansion, and this is basically its unit is what you can say strain per degree centigrade. I mean we take certain strain per 1 degree temperature change. तो हमारे पास ये temperature change है, and this is into length. So thermal expansion, I mean the delta due to the temperature change will be thermal expansion coefficient multiplied by the delta change into its length, ठीक है। अगर ये कोई बॉडी है जिसको हीट करें टेम्परेचर की वजह से जिसमें चेंज आएगा, देन इट विल बी delta change. And similarly we can if there is a kind of a non-uniform bar, we can use this integral part also. So in statically indeterminate, thermal displacement can be considered by the supports. Producing the thermal stresses must be considered in the design. Okay, so we should always consider this as another aspect of the strain. ऐसा ना हो कि हम लोग कोई बॉडी पार्ट डिज़ाइन करें या कोई स्ट्रक्चर का पार्ट डिज़ाइन करें, इवन इन आरसी स्ट्रक्चर्स द टेम्परेचर चेंजेस की वजह से समटाइम्स कंक्रीट एंड क्रैक इन सर्टेन एरियाज, तो वी हैव टू बी केयरफुल। इसकी वजह से इसके कुछ लिमिट्स हैं, वी हैव सम फार्मूलाज, एम्पेरिकल फार्मूलाज, एंड देन वी कैन कैलकुलेट ओके अगर इतनी टेम्परेचर चेंज आ रहा है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रीप एंड श्रिंकेज इनटू द आरसी स्ट्रक्चर्स आल्सो. So this is also one of the important part. Okay, so let me okay, अगर इसी को एक और एग्जांपल जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल की थी
उसमें ही मतलब अगर उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें फॉर थर्मल, इसके लिए इस वाले दिस एग्जांपल को अगर हम लोग थर्मल स्ट्रेसेस के लिए अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें, फॉर इंस्टेंस लेट्स से हमारे पास कोई भी बार है, this is fixed. Okay, suppose the length is 250 millimeter, and we have to calculate, there is a kind of a temperature change, and this can be any material, bronze or aluminium or steel, and it's E is equal to 100 GPa. It's alpha, which is thermal expansion coefficient, is equal to 16.9 into 10 raised to power minus 6 per degree, and then we can calculate, and the temperature changes, suppose 40 degree. Now we have to calculate the strain due to the temperature change. So strain due to temperature change will be equal to alpha into delta T into its length, which will be equal to 16.9 into 10 raised to power minus 6 multiplied by delta change is 40 multiplied with its length. This will be equal to actually, yeah, this is delta T. So this will be equal to 0.169 millimeter. Now, अगर हम लोग इस तरफ देखें, so is there any stress is developing due to this temperature change? I think so. The stress will be equal to 0 because now this is not strain. So thermal stress, there is no thermal stress. No thermal stress. Okay, because it is not restrained. अगर मैं इसी बार को इस तरह ड्रॉ करूं, this is also 250. Now there is definitely stress due to the temperature change. So that we have to calculate. I mean, there will be delta T, ठीक है? अगर यहाँ temperature change हो रहा है, I mean the temperature is changing, delta T, so it will cause the displacement in this bar, which is deformation due to temperature, ठीक है? उसकी वजह से there will be a normal force, ठीक है? Which will be, we can call P, acting in opposite direction because of the stress. So this will cause delta or change in the body in opposite direction. So that's what I was trying to explain. So that ये question मैंने इसलिए मतलब so जो total change in length होगा या total जो deformation होगी, that will be equal to temperature deformation, जो deformation temperature की वजह से हुई है, minus जो deformation normal force की वजह से होगी, ठीक है? But as it is restrained, we know this will be equal to 0. It will not change. Equal to 0. Okay. So this we can calculate using alpha delta T multiply with length. और ये हम लोग कैसे calculate कर सकेंगे? Using our normal force equation, which is equal to 0. ठीक है? ये उस तरफ चला जाएगा, वो इस तरफ आ जाए, then this will simply just कट जाएगा,
और इसको हम लोग रीअरेंज करके एंड जो ये पार्ट है दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस. So we can calculate the stress and then we can calculate the corresponding forces. So stress can be equal to alpha into delta t multiply with E. Okay, so ये हमारे पास strain due to T है. Uh, 100 gigapascal. This is E, this is delta T, and this is our thermal coefficient. And then we can calculate the stresses, which will be equal to 0.69. This comes out to be 0.0676 gigapascal. And then we can convert into megapascal, which will be 67.6, simply multiplying with 1000 megapascal. Okay. So answer
So in this condition we can first of all simply make the free body diagram. Temperature change की वजह से there will be FB and FA जो free body diagram बनी है already. So FA equal to FB is equal to F. Yeah. Delta BA is equal to 0 because it's fixed on both sides. So जो इस फोर्स की वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर माइनस डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स. सो वी कैन कैलकुलेट 0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल माइनस एफ ए और एफ बी डिवाइड बाय ए ई. Then we can put the values and then we can calculate the force, which is equal to 2.87, and stress will be equal to force over area will be equal to simply 11.5 kSI. This is a very simple question. Okay, so now we will try to solve another question, another numerical. So in this is it says the rigid bar shown in the figure, this figure is fixed to the top of the 3 posts. ठीक है, जो 3 posts हैं, it is fixed by this kind of a bar. Posts are made of steel and aluminium. The posts each have a length of 250 millimeter when no load is applied to the bar. ठीक है, when there is no load, then the length of the bar is 250 millimeter. Okay, the temperature is T1 is 20 degrees centigrade. Determine the force supported by each post if the bar is subjected to the uniform distributed load of 150 kilonewton and temperature is raised to T2 is equal to 80 degrees centigrade. So I mean, this is steel, this is aluminium, and this is steel. Okay, so we have the radius, area, diameters of these bars and the height, which is 250 millimeter. And now we have to calculate the जो हमारे पास these posts, ये जो columns हैं उस पे जो force apply हो रही है वो we have to calculate. ठीक है, so in this part, first of all, equilibrium equation. Let me first make the free body diagram. This is bar, and then there is FS steel, FA aluminium, and FS steel. ठीक है, हमारे पास load जो apply हो रहा है, that is basically it is 150 kilonewton multiplied by 0.6 meters. That will be equal to 90 kilonewtons. So equilibrium equation EFY equal to 0. So we have two FS because the elastic modulus is different, material is different, so we cannot take them as equal. So plus F due to aluminium minus the upward force 90 kilonewtons is equal to 0. So this is our first equation. Now for compatibility equation. Okay, now we have to check कि पहले लोड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो तीनों कॉलम्स में एक जैसी होगी. ठीक है, सो इक्वेशन आप कह सकते हैं जो हमारे पास ये लोड की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एल्यूमिनियम ड्यू टू लोड. ठीक है, फिर हमारे पास जो टेम्परेचर की वजह से डिफरेंस आ रहा है या टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रही है, दैट इज डिफरेंट फॉर स्टील एंड फॉर एल्यूमिनियम, बिकॉज दोनों का
जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, दिस इज इलास्टिक मॉडुलस एंड दिस इज थर्मल कोफिशिएंट, सो दैट इज डिफरेंट, सो जो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगी दैट इज डिफरेंट, सही है। सो अगर मैं डेल्टा स्टील की बात करूं सिर्फ, तो डेल्टा स्टील की जो एक तो डेल्टा मतलब हमारे पास एक डेल्टा हो रहा है फोर्स की वजह से, ओके, विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स विच वी टुक एज पॉजिटिव, सो टेम्परेचर की वजह से वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, देन डेल्टा स्टील ड्यू टू टेम्परेचर प्लस डेल्टा स्टील ड्यू टू फोर्स, ठीक है। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट स्टील के अंदर हुई है वो डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एल्यूमिनियम विल आल्सो बी इक्वल टू टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुई है एंड जो डिफॉर्मेशन हमारे पास फोर्स की वजह से हुई है, सो दिस विल बी another I mean temperature change की वजह से और total deformation in aluminum, as we know this will hold true, so we will take them equal, so minus delta S T temperature के लिए and delta S force के लिए, ठीक है, equal to delta aluminium temperature plus delta, sorry this will be negative, and delta aluminium due to force. Now we just need to put the हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, डेल्टा टी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज फॉर 80 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस 20, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 80 minus 20 equal to 40 degrees, sorry 60 degrees, yeah, okay, 60, okay, multiply with length plus F into L divided by AE, this will be negative. Similarly okay, so after putting all the values, Young modulus, thermal expansion coefficient for aluminium, for steel, we can have another equation which is Fs equal to 1.216 F aluminium minus 165.9 kilonewtons. So this is our second equation. So after simultaneously solving these equation, we can calculate the forces in Fs and Fs and F aluminium. So Fs is equal to minus 16.4 kilonewton and F aluminium will be equal to 123 kilonewton, and this will be in compression because हम लोगों ने negative में लिया था, and this will be in tension. So this is tension and this is compression. जो जब यहाँ इंक्रीज होगा एल्यूमिनियम की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, बट ड्यू टू दिस द चेंज इन डिफॉर्मेशन इन these both steel columns is lesser as compared to thermal expansion due to aluminum. So उसकी वजह से वो that will try to compress the aluminum while the steel force, जो steel के part हैं वो tension में हो जाएंगे, ठीक है. So then that's how we can calculate the forces in the what you can say steel and aluminum, and further we can calculate the stresses in the जो भी हमारे पास bars होंगे या जो area हम लोग को दिया हुआ है. So